everyone, my name is Veena Malya and thank you so much for your subscription. So guys, I just want to tell you that my channel has been monetized. It's just because of you. I just want to say big thank you. Thank you so much. It's just I'm so happy and do support and like my videos, share my videos. So yeah. So one more thing, I'm announcing giveaway on my YouTube channel for Christmas, New Year, and my monetization. So guys, follow my rules. All details are in description. So share this video and do not forget to leave your comment that which video is your favorite, and you can send me screenshot on my Instagram. My Instagram handle is Malvia Veena. You can send me there, and yeah, stay tuned and lucky winners will be announced in my next video whenever I post. So thank you so much. और अब बात करते हैं वीडियो की. So आज मैं इस अपने वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी most amazing 3 random hacks. I hope you like this video and I'm very sure about it. You just love it and you just enjoy this video because बहुत ही सिंपल है डेनिम को चेंज करना. बहुत ही कम चेंजेस के साथ में आप डेनिम को इसका पूरा लुक चेंज कर सकते हैं. So just watch my video and do not forget to leave your comment. So yeah, let's get started. So in this video I will be show you 3 types of denim hacks. So first we are making corset from denim. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेनिम का जो रिप है वो कट करना है बिकॉज अभी ये बिल्कुल यूज़ नहीं आने वाला है. एंड जो कॉर्सेट की जो आइडियल लेंथ होती है वो बिटवीन 8 to 10.5 इंचेस होती है. अगर आपकी हाइट मीडियम है तो आपको 8 इंचेस कट करना है पैनल, और इस जो बाकी है इसको बचा के रखना है बाद में बिकॉज हम इसका भी यूज़ करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में. सो जो भी पैनल है डेनिम के उसको कट करना है और एक फैब्रिक लेंथ वाइज कट करना है. कट करने के बाद में आपको 2 मेजरमेंट्स की नीड रहेगी. फर्स्ट लोअर बस्ट एंड सेकंड आपका वेस्ट. सो आपको मेजर करना है कि आपको लोअर बस्ट से 8 इंचेस कहाँ आ रहा है, वहाँ से आपको वेस्ट लेनी है. लेकिन ये कॉर्सेट एडजस्टेबल है सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, थोड़ा कम और ज़्यादा चलेगा. सो यहाँ पे मेरा वेस्ट का साइज़ है 30 एंड लोअर बस्ट साइज़ है मेरा 26. सो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ए लाइन पैनल कट करूँगी. आफ्टर कटिंग वी आर जॉइन द पैनल्स. सो आपने नोटिस किया होगा मैं यहाँ पे फ्रंट साइड से स्टिच कर रही हूँ. मैं यहाँ पे डबल स्टिच करूँगी, डबल फिनिशिंग बोलते हैं जिसे. सो फ्रंट साइड में स्टिच करने के बाद में आपको बैक साइड से भी ऐसे ही सेम स्टिच करना है. सो यहाँ पे जॉइंट्स स्टिच हो गए हैं. आपने नोटिस किया होगा डेनिम में ऑलवेज इन सिर्फ डबल नीडेड स्टिचेस होती हैं. सो मैं भी उसमें डबल नीडेड स्टिचेस करूँगी. मेक श्योर डेनिम का कलर आपको कॉन्ट्रास्ट लेना है, मैचिंग थ्रेड यूज़ नहीं करना है. सो यहाँ पे मैं एडजस्टेबल लेसेस के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी आईलेट बटन्स. अगर आपके पास में आईलेट बटन नहीं है तो आप यहाँ पे गाज भी कर सकती हैं. सो आपको इक्वल मार्किंग करने के बाद में आपको आईलेट्स लगाने हैं, आईलेट्स बटन. सो आईलेट बटन के लिए स्पेशली एक टूल होता है जिससे आईलेट बटन लगाते हैं, लेकिन मेरे पास में यहाँ पे टूल नहीं है. सो आई एम यूजिंग माई ज्वेलरी प्लग.
ये दोनों साइड से अनफिनिश्ड है, सो आई थॉट क्यों ना मैं नीचे से इसको रिप करूँ। सो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रिप करना है, सारे नॉचेस कट करके आपको सारे थ्रेड्स फ्री करना है। सो इसका जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड इसकी डिटेलिंग्स है वो बढ़ जाएगी। सो माई कॉर्सेट इज़ ऑलमोस्ट डन और मैं अभी इसमें यूज़ करने वाली हूँ सैटिन रिबन। सो सैटिन रिबन को आप चेंज भी कर सकते हैं, इवन आप नेम वाली लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू आर स्टाइलिश एंड माई कॉर्सेट इज डन। Second, I'm making a mini denim skirt. This is a very common idea. So thought क्यों ना मैं आपके साथ में इसको रीन्यू करूँ। सो बेसिकली इनसाइड से आपको इसकी जो इनसिम है वहाँ से कट करना है और इसके जो डबल साइडेड स्टिचेस हैं उसको फ्रंट में रखना है और आपको फ्लाइट तक कट करना है सो दैट हम उसको ओवरलैप अच्छे से कर पाएँ, जैसा मैं वीडियो में कर रही हूँ। एंड अभी मैं इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद में आप इसको स्टिच कर सकते हैं जब ये ड्राई हो जाए। So repeat the same process for the back. Make sure the double line stitches line should be front and fix it from fabric glue. If you are looking extra fabric, then cut it, and I like the cut and detailing, so I will keep it as it is. It will look good. After cut the hemline, I'm doing ripped from the edges. So just cut the notches like 1 inches and just fray from any tool. Like if you have hand needles, sharp tool, then you can do it very easily. So after rip the hemline, my denim skirt is ready, and this is my final look. I hope you like my idea. I hope you like my hack. It's very comfortable. I have styled with a black simple t-shirt and with golden jade red lipstick. It's looking very classy on me. Guys, trust me. Never throw your old denim jeans. Just do some changes and your denim will look amazing. Yeah, so yeah, I hope you like this my idea. And second, I have styled with net skirt. इवन मैंने इसका वीडियो पहले भी अपलोड किया है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इट्स वेरी इजी टू मेक एंड विद इन 15 मिनट्स यू कैन मेक नेट। गाइस नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ गाल्टर जींस। अगर आपने गाल्टर जींस के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगी गाल्टर जींस का ट्यूटोरियल। दिस इज़ वेरी इजी टू मेक, यू कैन मेक विद इन हाफ एन आवर। सो बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना। आपको सिंपली एक आपके डेनिम जींस को कट करना है फ्रॉम थाई। आप जितना शॉर्ट्स पहनती हैं उतना, एंड मेक श्योर आपका जो कट है वो बिटवीन थाई एंड नी के बीच में हो। सो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद में जो भी पैनल्स हैं उसकी जो एजिंग है उसको फिनिश करना है फ्रॉम टॉप स्टिच।
डी रिंग को अटैच करने के लिए डेनिम की एक स्ट्राइप बनानी है। इट्स वेरी इजी, जस्ट फैब्रिक की स्ट्राइप कट करनी है जितनी आपकी डी रिंग की साइज़ है। उसके बाद में उसको टर्न करने के बाद में अटैच करना है। आप टर्न किसी भी टूल से कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सारे मैंने पैनल्स में रिंग अटैच कर दी है, डी रिंग अटैच कर दी है। ऊपर की साइड मैंने 2 रिंग अटैच की हैं और नीचे वाले जो पैनल है उसमें 1 रिंग ही अटैच की है। सो उसमें मैं यहाँ पे बेल्ट में यूज़ करने वाली हूँ मेरा ये कस्टमाइज नेम। गाइस, ये नाम मैंने खुद से लिखा है मार्केट से। आपको सिंपली एक टेप परचेज़ करनी है मार्केट से और अपना जो नाम लिखना चाहते हैं, जो लेटर बनाना चाहते हैं, वो फिर बना के आप इसको कर सकते हैं यूज़। तो ये मेरा पर्सनली मुझे मेरे नाम का ही ये टेप चाहिए था, इसलिए मैंने मेरा नाम लिखा है लव बाय वीना मालविया। और इस टेप को करना है अटैच दोनों साइड। एंड ये जो स्ट्रैप है वो एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेंथ। एंड माई गार्टर जींस इज रेडी।